I want to talk to a friend. Should I call her? Should I message her? Or even better, should I go to her place? There are so many options, right? But as we discussed earlier, our neurons just have two means to communicate. Hi everyone, I'm Rushali Jain and this video is brought to you by PsychLogic. This video is in continuation to the previous one in which we discussed about a neuron, the types, the basic functions, synapse and action potential. You can click on the I button to watch that video, as then you will have a better understanding of what we are going to discuss now. In this video, we are going to talk in detail about neurotransmitters and how are they helpful. Like we have discussed earlier, a neuron communicates through electric and chemical signals. The electric signals are called ions, which are responsible for the action potential, and the chemical ones may be neurotransmitters or hormones. To understand all about the neurotransmitters, there are a few terms about action potential that we need to remember. The first is that the basic charge of a neuron while it is at rest, that is in the resting potential, it is minus 70 millivolts. And a neuron needs to depolarize itself, means the charge of the neuron has to go up to minus 55 millivolts for an action potential to take place. This is called depolarization, when the charge of the neuron is increasing. And the opposite of depolarization is hyperpolarization, which means the charge of the neuron will go down. मतलब minus 70 milliwatt से भी नीचे, जैसे minus 72 milliwatts तक mostly जाता है hyperpolarization के बाद. ये तो हमने चार्जेस के बारे में डिस्कस किया कि एक्शन पोटेंशियल में क्या क्या चार्जेस होते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स में. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे प्री साइनेप्टिक वेसल्स, पोस्ट साइनेप्टिक वेसल क्या होते हैं. सो एज वी ऑलरेडी नो कि कोई भी मैसेज जो हमारा न्यूरॉन रिसीव कर रहा है वो अपनी डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव कर रहा है. एंड देन व्हेन द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट्स, अगर वो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हमारा न्यूरॉन डीपोलराइज होगा and action potential will take place. That means the message will then go down through the axon and axon terminal tak reach karega. Now till here only electric message is being transferred. Ions के through ही सब कुछ यहाँ work कर रहा है. There is no use of neurotransmitters yet. Now in the axon terminal, the neurotransmitters are made and stored in this terminal vessel. And क्योंकि ये synapse के पहले वाला region है, इसको हम प्री साइनेप्टिक वेसल भी कहते हैं. एंड जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, साइनेप्स इज अ गैप वेयर द न्यूरॉन इज कम्युनिकेटिंग विद द अदर न्यूरॉन्स. सो इस रीजन को, इस साइनेप्टिक गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं. एंड जो दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, दोस आर द पोस्ट साइनेप्टिक वेसल्स. ओके, सो नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर्स. अब आप सब ने कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम बहुत ऑफन सुने होंगे, जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स एटसेट्रा. सो है क्या ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड ये करते क्या हैं? बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिंपल chemical messengers, and these chemical messengers are communicating between two nerve cells or neurons. Like I already told, जो neurotransmitters है axon terminal में बनते हैं and वहीं store होते हैं, and वहाँ से synaptic cleft में ये release होते हैं, and then they reach the receiver dendrites or the post-synaptic neuron. That is how the information is passed from one neuron to the other. And ये neurotransmitters specific amino acid से बनते हैं, which is a form of protein. So अभी तक हमने क्या समझा? जो न्यूरॉन है उसके अंदर जो भी मैसेज ट्रैवल कर रहा है वो आयंस के थ्रू कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक इन नेचर. एंड जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, दैट इज हैपनिंग थ्रू द केमिकल मैसेंजर्स, दैट इज neurotransmitters or hormones. Here we are going to talk in detail about the neurotransmitters. So there are three categories in which these neurotransmitters are divided, that is excitatory, inhibitory and modulatory. Let's learn these three with the help of some mnemonics to remember them in the long run. Now excitatory sounds similar to excite, right? जब आप excited होते हो तो आपके अंदर energy बढ़ जाती है, right? Similarly in a neuron, जब excitatory neurotransmitter दूसरे न्यूरॉन में जाता है, there are more chances of that neuron to depolarize. डीपोलराइज मतलब उसका चार्ज -70 मिलीवॉट से बढ़कर -55 मिलीवॉट्स हो जाएगा, which will make it more likely for the action potential to take place.
Some examples of this excitatory neurotransmitter are epinephrine, norepinephrine, glutamate, etc. We'll talk about them. The next is inhibitory. Now this is quite an opposite of the excitatory neurotransmitter. If the inhibitory neurotransmitter is traveling to the other neuron, it makes it more likely to hyperpolarize the neuron. मतलब उस न्यूरॉन का चार्ज -70 milliwatts से और कम हो जाएगा, maybe to -72 milliwatts, because of which action potential will not take place. मोस्टली इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या होता है, जब हमारा न्यूरॉन ऑलरेडी बहुत चार्ज्ड अप है, जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड ऑलरेडी है, तो हमें रेस्टिंग पोटेंशियल पे वापस लाने के लिए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का यूज होता है. Examples of this type of neurotransmitters are GABA, serotonin, acetylcholine, etc. Now, these two types of neurotransmitters are basically communicating with just one neuron at a time. But जब हम modulatory neurotransmitters की बात करते हैं, they are capable of communicating with more than one neurons. अब obviously जब ये एक से ज्यादा न्यूरॉन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये एक लार्ज एरिया को भी अफेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी अ लिटिल स्लोअर देन एक सिंगल न्यूरॉन से जब ट्रांसफर हो रही है इन्फॉर्मेशन. And these neurotransmitters can be inhibitory or excitatory or even both, जैसे dopamine. Okay, so let's talk about the neurotransmitters that are falling into these categories. First, let's discuss about the excitatory neurotransmitters. Please note, this is again an overview of the neurotransmitters. For more details, please check out the notes. Now let's begin with glutamate. Now glutamate is a neurotransmitter which is found in the central nervous system. And this is the one that helps in cognitive functions, जैसे memory है, learning है. Now if there is an excess amount of glutamate, this causes excitotoxicity, जिसका मतलब है कि over activation हो जाता है glutamate receptors का. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द ओवर एक्टिवेशन जो न्यूरॉन्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण अल्जाइमर्स, एपिलेप्सी या ब्रेन स्ट्रोक टाइप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. And if the release of glutamate is not enough, then it results in the conditions of psychosis, insomnia, concentration problems, etc. etc. Next comes acetylcholine. Acetylcholine is a neurotransmitter which is found in both central nervous system and parasympathetic nervous system. And इसके functions हमारे muscle movements, memory, learning and motor neurons से associated होते हैं. So if there is an over-activation of the acetylcholine, then there are conditions of increased salivation, muscle weakening, blurred vision and even paralysis. And if there is not enough acetylcholine, then there are problems in learning and memory impairments. According to a research done by Ham and Yackel in 2017, acetylcholine has been linked to dementia and Alzheimer's also. Next on the list is dopamine. This is produced in the areas of the brains called substantia nigra, ventral tegmental area, and hypothalamus. And we know this as the reward or the pleasure neurotransmitter. And dopamine, as I already told, is an excitatory and inhibitory neurotransmitter, and it is a neuromodulator or modulatory neurotransmitter as well. This is involved in the reward, motivation, addictions, all of these areas. So अगर dopamine excess में release हो रहा है, it will result in competitive behaviors, aggression and poor control over impulses. आपको पता है जो ये drug addicts होते हैं, the drugs that they take are actually increasing the release of dopamine, जिससे उनको बहुत pleasure feel होता है. And आपको पता है अगर dopamine की deficiency हो जाए body में, then we feel a little depressed. And you know, the drugs like cocaine, marijuana, heroin, ये सब हमारे neurotransmission को ही affect करते हैं. मतलब ये हमारे neurotransmitters का release increase या decrease कर देते हैं, जिसके कारण our brain is not able to function normally. Do you know why do people start taking higher doses of these drugs? यहाँ पे भी dopamine का बहुत बड़ा रोल है. When people start taking drugs, वो बेसिकली एक प्लेजर सीख कर रहे होते हैं जो उनको और किसी चीज से नहीं मिल रहा होता. सो दे टेंड टू टेक ड्रग्स एज इन इजी रिजॉर्ट. अब उस ड्रग के इनटेक से स्मॉल अमाउंट से ही उनका डोपामीन हिट हो रहा है, बट दिस विल नॉट हैपन टिल फॉरएवर. धीरे धीरे उनकी बॉडी इस डोपामीन रिलीज के लिए यूज्ड टू हो जाती है. एज अ रिजल्ट दे स्टार्ट टेकिंग हायर अमाउंट ऑफ दैट ड्रग टू गेट द सेम डोपामीन हिट. एंड अ फन फैक्ट, ये डोपामीन हिट सिर्फ ड्रग से नहीं होता. इट कैन बी फ्रॉम एनी प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी लाइक डांसिंग. अगर आपको डांस करना पसंद है, डांस करने से आपको डोपामीन हिट मिलेगा. आपको ड्राइंग करना पसंद है, ड्राइंग करने से आपको डोपामीन हिट मिलेगा. ऐसे ही जब हम कोई एक सॉन्ग सुन रहे होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग,
इनिशियली हमें वो बहुत पसंद है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वी स्टार्ट फीलिंग बोर्ड विद दैट सेम सॉन्ग, क्योंकि जितना डोपामिन रिलीज हमारा इनिशियली उसको सुनने पे रिलीज हो रहा था, अब उतना नहीं हो रहा. वी आर गेटिंग यूज्ड टू दैट. अब हमें चाहिए कोई नया सॉन्ग. अब आप सबने एड्रेनालिन रश तो सुना ही होगा. सो देयर इज अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड epinephrine. Epinephrine is a hormone also which is called adrenaline, and adrenaline का basic function fight or flight response में होता है. So if the release of adrenaline is too much, it leads to high blood pressure, anxiety, insomnia, and if it is too little, then it leads to diminished excitement. मतलब आप excited feel ही नहीं करोगे, and stressful situations को भी आप handle नहीं कर पाओगे. And इसी का opposite है norepinephrine, which is released in the adrenal gland. एंड इसको नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं. नाउ व्हाट दिस डज इज ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करता है. एंड आपको पता है ये सबसे ज्यादा कब रिलीज होता है? जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो. एंड सबसे लो रिलीज इसका तब होता है जब आप सो रहे हो, बिकॉज यू रिलैक्स्ड देयर. फाइट और फ्लाइट का कोई यूज ही नहीं है वहाँ. सो इफ देयर इज अ हाई लेवल ऑफ नॉर एड्रेनालिन, देन इट लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर एंड एक्सेसिव स्वेटिंग और एंग्शियस फील होता है आपको. एंड अगर ये लो लेवल में रिलीज हो रहा है, then you start feeling depressed. Okay, now let's talk about inhibitory neurotransmitters. The first on this list is GABA, which is gamma aminobutyric acid. Actually, this is a very important neurotransmitter. And ये हमारे ब्रेन के बहुत सारे regions में मिलता है, which is hippocampus, thalamus, basal ganglia, hypothalamus and the brain stem. And इसका main function होता है हमारी anxiety को regulate करना, हमारे vision and motor functions को control करना. So अगर GABA का release हमारी body में कम होगा, तो impulse control भी हमारा कम हो जाएगा. And this leads to some mental health issues such as bipolar disorder and mania. We'll talk about these disorders and mental health issues in the clinical psychology lectures. And अगर GABA की production बहुत ज्यादा हो रही है, then it results to hypersomnia. बहुत ज्यादा नींद आती है, oversleeping and lack of energy. Next is serotonin. Now serotonin again is a neurotransmitter and a hormone. And this controls our mood and affects our happiness. And serotonin भी हमारी anxiety को regulate करता है, हमारे appetite को, हमारे pain को and हमारे sleep cycles को भी control करता है. And आपको पता है ये ऐसा neurotransmitter है जो हमारे brain को stimulate नहीं कर रहा है. Rather than that, ये हमारे excitatory neurotransmitters को balance करता है. So अगर इसका release कम होता है, so then we start feeling depressed or there is sadness, we feel anxious, suicidal thoughts आते हैं. And if the release of serotonin increases, so then it leads to some situations of restlessness. We start hallucinating, confused हो जाते हैं हम, which is again what happens as a reaction of some drugs. And dopamine and acetylcholine भी inhibitory neurotransmitters की list में आते हैं. We've already discussed about them. Okay, so modulatory neurotransmitters कौन से होते हैं? जो large area को affect कर रहे हैं, more than one neurons के साथ connections form कर रहे हैं, and these neurotransmitters can be inhibitory, excitatory or even both. So dopamine, serotonin, acetylcholine, norepinephrine, ये सब modulatory neurotransmitters में भी आते हैं. So till now we have understood that excitatory neurotransmitters will make it more likely for the receiver neuron to undergo an action potential, and an inhibitory neurotransmitter will have an opposite effect. Inhibitory neurotransmitter दूसरे न्यूरॉन में जाकर उसको hyperpolarize करेंगे. Inhibitory and excitatory both are sending the message to only one neuron. They are reaching only to one neuron. But when we talk about modulatory neurotransmitter, ये एक से ज्यादा neurons तक contact कर रहे हैं. Now the effect of this neurotransmitter कि वो excitatory होगा, inhibitory होगा, कि वो modulatory effect होगा, all of this depends on the area where this message is being transferred or the message. मतलब जो message travel कर रहा है वो और जिस एरिया में ये ट्रैवल कर रहा है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा कि वो न्यूरोट्रांसमीटर किस टाइप का बिहेवियर शो करेगा. जैसे डोपामीन है, वो तीनों कैटेगरीज में आ रहा है. इट कैन बी एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इट कैन बी एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इवन अ मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. तो उसका इफेक्ट कैसे पता चलेगा कि वो एक्साइटेटरी की तरह वर्क कर रहा है, इनहिबिटरी की तरह कर रहा है कि मॉड्यूलेटरी की तरह कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द मैसेज एंड द एरिया. So ये जो दो केमिकल मैसेंजर्स हमारे हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स है, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू.
जो हमारे न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं, these are a part of our nervous system, central और peripheral both. मतलब न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो कनेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं, they are happening because of the neurotransmitters. But the hormones on the other hand belong to the endocrine glands, endocrine system, जिसमें हमारे pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, ये सारे glands आते हैं. And hormones are released directly into the bloodstream. Neurotransmitters हमारी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली नहीं जाते हैं, ये हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाते हैं एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ये दूसरे रिसेप्टर के पास जाते हैं. अब बेसिकली होता क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को. मतलब कि जिस तरह से भी हमारे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बेसिकली कमांड आएगा, उस हिसाब से न्यूरोट्रांसमिटर्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करेंगे. सो देयरफॉर द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमिटर्स विल अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स एंड इन रिटर्न the secretion of the hormones will then affect the release of the neurotransmitters. मतलब ये दोनों एक vicious cycle के अंदर चल रहे हैं. Both are affecting each other. अब जैसे कोई fight or flight situation आई, so in this fight or flight situation, the neurotransmitter epinephrine will pass the command to the endocrine gland, adrenal gland, to secrete adrenaline, which is going to help us fight that situation or help us run away from it. Okay, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, I'll try to put it up in an example so that आप इसको एक स्टोरी की तरह भी याद कर सकते हो. Now suppose you plan to go on a trek. You're very excited. सब प्लानिंग कर ली है आपने, पैकिंग भी करनी शुरू कर दी है. Here your dopamine levels are high because here you are finding pleasure in thinking about the fun that you're going to have on that trek. अब अगर आपको पता चले कि इस ट्रैक का प्लान कैंसिल हो रहा है for some reason, you will definitely freak out. In this condition, your cortisol hormone, which is the stress hormone, will be released. ये cortisol hormone तब रिलीज होता है जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंग्शियस फील कर रहे हो. अब जब आप इतने एक्साइटेड थे उस ट्रैक के लिए, इतनी आसानी से तो जाने नहीं दोगे. You'll find out ways to go on a different track maybe. तो जब आप दोबारा से प्लानिंग करते हो एंड तब आपको सक्सेसफुल दिख रहा होता है आपका प्लान, then the dopamine levels increase even higher. आपको और मजा आ रहा है उस प्लानिंग को करने में. And finally जब आप इस ट्रैक पे जाते हो, you meet a person. And slowly and steadily you build a liking towards that person. अब यहाँ पे एक love hormone which is oxytocin वो रिलीज होगा. And ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी सोशल बॉन्डिंग, ट्रस्ट, अटैचमेंट, इन सब चीजों के लिए. And if suddenly you see a wild animal there and आपको ऐसा लग रहा है अब ये तो मुझे खा ही जाएगा, it is the end. Here you are in a fight or flight situation. So yes, you guessed it right. यहाँ पर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा विच इज अ न्यूरोट्रांसमिटर जो आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन के अंदर अपनी सारी एनर्जी यूज करने के लिए. बेसिकली जो भी अनइम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उन सब के ऊपर एनर्जी वेस्ट करने की बजाय ये आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी इस सिचुएशन को डील करने में हेल्प करेगा. अब किसी तरह यू सेव्ड योरसेल्फ फ्रॉम दैट वाइल्ड एनिमल एंड बॉडी तो अभी भी फाइट और फ्लाइट वाली स्टेज में थी. अब उसको वापस नॉर्मलाइज भी तो करना है ना. तो नॉर्मलाइज करने के लिए हमारा गाबा विच इज गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड एंड दिस इज अ न्यूरोट्रांसमिटर, ये हमारी बॉडी के स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल्स को रेगुलेट करेगा एंड हमें वापस नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में लेकर आएगा. सो आई होप आपको इस स्टोरी के थ्रू काफी सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी. So that's it for today. You can click on the link given in the description box to get access to your free lecture notes, which are prepared in detail for you to ace your exams. Don't forget to join us on WhatsApp, Instagram, Telegram, and YouTube, of course, as we are dedicated to complete the course before your exams. Stay tuned. Happy learning!